I want to own the fastest car. I want to travel in a private jet and I want it in a faster pace. ये नहीं 80 साल में. If you are doing a job, it is the easiest thing to do. ज्यादातर लोग जो शायद ये देख रहे होंगे उनके पास ये फैमिली के अंदर Support नहीं है. हाँ वो सपोर्ट नहीं है. तो what should someone in that scenario do according to you? The first and the most powerful enemy which you face is you yourself. ऐसा क्या उनको इन कॉन्वर्सेशंस में मिलेगा जो उनको आज की डेट में बाकी यूट्यूब के पॉडकास्ट पे नहीं मिल रहा है? Mindset. Elaborate. Diversification. There are amazing people who have done great jobs जो हमें पता ही नहीं लगते. I am a 4th generation soldier. मेरे में सारे my sisters are married to army officers. Everyone has done the mandated service. It is only me जो 20 साल में फौज छोड़ के आ गए. अगर मुझे नौकरी करनी थी तो मैं I can guarantee you one thing. आर्मी से अच्छी कोई नौकरी नहीं है. Why you want to become an entrepreneur? You are wearing a t-shirt of that. मैंने तो फिर भी I am just wearing a अपनी tactical type of a t-shirt. You get up in the morning, go to the office, come back, sleep, get up in the morning. कुछ किया? नहीं किया. The Apex 21 Day Challenge जो आपने Yes. लॉन्च किया, इसके बारे में कुछ बताइए कि where did the thought for this come from? What do we want to achieve with this and where does this go in the future? Increase it to 45, which is an intermediate challenge, and 90 will be apex of the apex. You will be transformed for life. अब मैं 44, 45 में entrepreneur बन रहा हूँ. I have to think of so many things, and that mindset kills people. जय हिंद guys, we are starting with Apex Conversations. मेरा एक ड्रीम है इंडिया को इकोनॉमिक्स, मिलिट्री, फिटनेस सब में सुपर पावर बनाने का. और ये मेरा ड्रीम अकेले का नहीं है. अगर आप लोग मेरे साथ नहीं हैं, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर आप लोग मेरे पीछे नहीं रहेंगे और साथ नहीं चलेंगे, वी कैन नेवर डू इट. द मेन एम ऑफ स्टार्टिंग दिस कॉन्वर्सेशन इज टू गेट डाइवर्स पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. हमारे जो गेस्ट्स होंगे, दे विल बी कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, लॉयर्स, पॉलिटिशियंस. आप उनसे किस प्रकार सीख सकते हैं एंड हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टू बीइंग, टू मेकिंग दिस नेशन द बेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड is the underlying aim of Apex Conversations. So guys, keep tuned in and this will be the first episode of Apex Conversations. Jai Hind. तो सर ये जो 1 करोड़ एंटरप्रेन्योर वाला ड्रीम है और मिशन है, इसका एक मैं कोर समझना चाहता हूँ कि आपके मानने में एक एंटरप्रेन्योर है क्या और उसका क्या वजूद है. मैं जैसे आप कभी बैंक में क्वेश्चन पूछते हैं ना, आपसे पूछते हैं कि भाई आप एम्प्लॉयड हो कि सेल्फ एम्प्लॉयड हो. एंटरप्रेन्योर का कोई वो ही नहीं है, वजूद ही नहीं है एक तरह से इंडिया में इन जनरल. तो आपका इस पे क्या थॉट है? व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योर एंड हाउ इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री? मेरा मानना है there are two types of mindsets. One is a employer's mindset and one is a employee mindset. ठीक है. अभी जो एम्प्लॉई रहा है वो एम्प्लॉयर बने एंड कोई यू स्टार्टेड एज अ स्ट्रेट अवे एज अ एंटरप्रेन्योर ओनली, है ना. आप 18-19 में आपने शुरू कर दी. द पॉइंट विच नीड्स टू बी अंडरस्टूड इज जो 1 करोड़ एंटरप्रेन्योर्स हैं, मेरा आइडियोलॉजी इज सिंपल. दैट गाय सबसे इंपॉर्टेंट, ऑल माई लाइफ आई हैव टेकन रिस्क, सबसे बड़ा रिस्क ले रहा है. रिस्क फैक्टर इज देयर. सेकेंडली, he's giving jobs to the community, giving jobs to the people who require it and to our own, which will be a great factor. कितनी unemployment है, ठीक है. If you are able to provide jobs to people, you are doing a great job. And that you cannot provide jobs अगर आप, if you are an employee. So that is why मैंने बताया कि जो employer और employee हैं, that is a great mindset which needs to be. मेरा उसमें सबसे important point है this, जो आपने किया, what you did. You started at 18-19 as an entrepreneur. ठीक है, हुआ नहीं हुआ, you did a job. तो मेरे हिसाब से, in my view, अगर कोई बंदा सीधा ही entrepreneur बन जाए, it's nothing like it. Because why? As young people, आप में रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है. You don't have a family to support. You are not married, you don't have kids. अब मैं 44, 45 में entrepreneur बन रहा हूं. I have to think of so many things कि whether, and that mindset
kills people. There are people who leave army. There are people who leave a job, come into different jobs, keep on shifting. But job is still a job. आप यानी कि you don't have that kind of freedom, you don't have that kind of how would I term it? कि you don't have that thing in you कि आप you can make a difference to the society. मैं बता रहा हूँ employer और employees mindset में ही लोग they will keep on doing changing jobs. It makes you mediocre. It is the easiest thing to do actually. True. If you are doing a job, it is the easiest thing to do. You're just doing a job. It's a job for you. As an entrepreneur, you're creating creativity, risk taking. These are the things which are inherent in me. Failure, nahi chala, phir dusra. So this is how what we have done. I would like to ask you, तू मुझे बता कि don't you think कि the Apex Academy or Apex Private Limited, which we have started, what is the thought process? You are a young man, 28 years of age, started at 18, फिर failures हुए. So what in math, it's a counter question or a counter view. What do you think in your view an entrepreneur has to be? Why you want to become an entrepreneur? You are wearing a t-shirt of that. मैंने तो फिर भी I am just wearing a अपनी tactical type of a t-shirt. जी. But you are तो wearing a. Why do you want to become an entrepreneur? Tell me the reason. Yeah. सब मेरा भी जो आपका था ना कि ऑर्डर्स ना ले पाना या the aversion to orders. Yeah. ये मेरा एक पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक रहा है बचपन से ही. मतलब मुझे बड़ी चिढ़ मचती थी अगर कोई मुझे बोल दे कि यार ये करो. और मुझे ज्यादा चिढ़ तब मचती थी जब इनकॉम्पिटेंट लोग मुझे ऑर्डर देते. यानी कि you give me a task, I will do the task, but don't tell me how to do my job. Correct. Because I am the best at it. Correct. So yeah, I can understand. So the one core was an aversion to orders Take or an orders, aversion yeah. to authority कि भाई मुझे हाँ, बताओ क्या करना. नहीं है. The other was कि मुझे हमेशा से कुछ बहुत बड़ा करने का मन था. I never want. I still gun for yeah, let's make the biggest, the richest, the baddest business in the world. Baddest business, right? yeah. So that the only real way to do it is to be an entrepreneur. And I want to do it ASAP. I don't want to do यार पहले ये कर लेते हैं फिर थोड़ा पैसा आएगा फिर blitzkrieg. Correct. Blitzscaling. अपने को मतलब तत्काल प्रभाव से चाहिए जो चाहिए. Yeah. तो that is why I started very early or as soon as I possibly could. इसमें सर एक dimension I feel जो बहुत important है discussion का वो mindset not just of the individual but of the general family or society. Absolutely. मेरे पास ये luxury थी कि मैं बहुत बार भिड़ूं, फेल हूं, वापस खड़ा हूं, फेल हूं और मेरी फैमिली मुझे उसमें सपोर्ट करी है. ज्यादातर लोग जो शायद ये देख रहे होंगे उनके पास अगर वो रिस्क टेकिंग माइंडसेट है भी ना, क्योंकि एट इट्स हार्ट एन एंटरप्रेन्योर इज टेकिंग रिस्क. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. कोई धंधा शॉर्ट नहीं है. जब भी आप कुछ बनाने जा रहे हो उसमें कुछ रिस्क तो इन्वॉल्व है कि शायद ही नहीं चलेगा. आज जो हम चला रहे हैं वो शायद ना चले. तो वी पिवट, वी थिंक ऑफ द नेक्स्ट, राइट. तो लड़ने को हो सकता है यार वो बच्चा तैयार है या वो उसके अंदर वो रिस्क टेकिंग एपेटाइट है बट उसकी फैमिली के अंदर सपोर्ट नहीं है. हाँ, वो सपोर्ट नहीं है. तो व्हाट शुड समवन इन दैट सिनेरियो डू अकॉर्डिंग टू यू? अब मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं. एवरीवन इन माय सर्विस, इन माय फैमिली, आई एम अ 4th जनरेशन सोल्जर. ठीक है, मैं 4th जनरेशन सोल्जर हूं. मेरे में सारे, माय sisters are married to army officers. Everyone has done the mandated service. It is only me जो 20 साल में फौज छोड़ के आ गया. Because I joined reasons for, and I can see they are not very happy with that decision. Because they have been brought up like that. They will not say, यानी openly नहीं बोलेंगे कि it's a good decision, bad decision, ये क्यों नहीं बने, वो क्यों नहीं बने. पर ये बात एक चीज है, आर्मी वॉज लाइक अ पैशन फॉर मी. ठीक है, मैंने रैंक मनी के लिए ज्वाइन ही नहीं की थी. यस, नाउ दैट आई एम एन एंटरप्रेन्योर, मुझे अब पैसा चाहिए. अब मुझे पैसा चाहिए. आई वॉन्ट टू ओन द फास्टेस्ट कार. आई वॉन्ट टू ट्रेवल इन अ प्राइवेट जेट एंड आई वॉन्ट इट इन अ फास्टर पेस जिसको मैं एंजॉय कर.
ये नहीं 80 साल में ठीक है 80 साल में भी आई विल बी वर्किंग बिकॉज द काइंड ऑफ पर्सन आई एम आई विल बी वर्किंग बट वेयर डू आई गो व्हाट डू आई डू तो मेरी फैमिली में तो सब लोग फोर्थ जनरेशन सोल्जर्स है मैं पहला जनरेशन एंटरप्रेन्योर फेलियर्स गलोर लाइक ऑलवेज एंड नोबडी हैज सपोर्टेड मी मैं अपना काम करता हूं फेल होता हूं इधर जाता हूं उसको ट्राई करता हूं दिस इट डजंट यानी कि बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन आई एम लुकिंग एट माई सेल्फ आई स्टिल सी दैट स्ट्रीक ऑफ स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर इन मी अगर मुझे नौकरी करनी थी तो मैं आई कैन गारंटी यू वन थिंग आई टेल इट फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट मैं आपको सच बोलता हूं आर्मी से अच्छी कोई नौकरी ही नहीं है इट इज देयर इज द ग्रेटेस्ट जॉब यू कैन एवर गेट So can you elaborate on this? मतलब how so? the kind of environment you get, the perks, privileges, and it is a very decent pay. You will not be having a luxurious life, but decent lifestyle you can afford. ठीक है? Nobody asks you at the end of the month that how many terrorists you killed. Even if you have missed terrorists, your pay will come. You have a sound backing. ठीक है? You have a pensionable job. A job which is giving you that kind of money. You have perks and privileges. The environment, even places like every army cantonment will have football fields, tennis courts, horse riding clubs. अगर आपको भारत सिविल में वो पसंद लेनी है, not everybody can afford it. Apart from the upper strata, that is why I tell you. And then leaving army and doing corporate job is like I personally find it very very यानी कि बंदा फौज छोड़ के सिविल में भी नौकरी मे बी देयर इज अ पर्सनल चॉइस एवरीबडी इज मेड यू माइट बी गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी बट आई डोंट फाइंड कि लीविंग आर्मी की जॉब छोड़ के सिविल आई हैव नेवर वर्कड इन कॉर्पोरेट बिकॉज आई नेवर वांटेड टू वर्क सो either you are here or you are here either I am giving orders I will not take orders that part of my life is away so I find it very entrepreneur yani ki I find it very challenging every day I have to think ki how I can make myself better I'm constantly learning and एज अ पर्सन अगर मैं अपने आप को फिजिकली और मेंटली नहीं चैलेंज अभी भी लोग बोलेंगे क्यों क्या जरूरत है अब तो फौज में भी नहीं रहे पीटी क्यों करते हो अरे दैट इज इनग्रेन्ड इन मी इफ आई एम नॉट चैलेंजिंग माय फिजिकल कैपेबिलिटीज माय मेंटल मैं पढ़ नहीं रहा हूं why we have collaborated I am not learning this guy who had come today this young guy 15-year-old AI expert I am like really in awe of that person reading अभी तो उसने अपनी AI की mandated पढ़ाई भी नहीं शुरू की लेकिन he's learning through the net that kind of energy यानी कि if यानी कि कोई रिस्क ही नहीं है लाइफ में यू आर जस्ट लीडिंग अ नॉर्मल यू गेट अप इन द मॉर्निंग गो टू द ऑफिस कम बैक स्लीप गेट अप इन द मॉर्निंग वेरी मोनोटोनस कुछ यानी कुछ कुछ किया नहीं किया एट द एंड ऑफ द डे यू विल फाइंड हाफ ऑफ देम दे वर पीपल हु आर unhappy will remain unhappy throughout people don't want challenges I don't understand why don't they want I think sir it's people in general in India do not want instability or volatility in their life हाँ यानी कि सबको एक सेट पेस पे चाहिए yeah they want that yeah that is a major and I think this is very much a mindset thing than anything else ये मतलब बचपन से ही ingrained है थोड़ा कि हम लोग डी-रिस्क करते हैं चीजें चाहे अपने बच्चे कोई कि भाई वो मत छूना जल्दी घर आ जाना बदल yeah that's okay right we are more protective in nature maybe. But I think that being protective as you grow older also translates into your life decisions right आपको जिस तरह से 18 की उम्र तक या 16 की उम्र तक sort of रेज किया गया है वही फिर आपका बचे हुए 50 60 70 80 साल आपका एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाएगा राइट मतलब माइंडसेट इफ for lack of a better definition is the operating system for all your actions decision making right whatever you do in life yes it is processed it is like yeah that is why
And the other thing is evolution, adaptability, evolving. If you are not evolving as a person in any stage of your life, you are dead. True. यानी कि आप कुछ नया कुछ कर ही नहीं रहे अपने उसके साथ. And I find people asking me कि सर ये कैसे हो? First, you didn't challenge your limits. ठीक है, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो ये है. हम 800 मीटर भाग सकते हैं, 1000 जाया नहीं जा रहा, 3 किलोमीटर 5 नहीं. अरे उसको पुश तो करो, यानी ट्राई अ न्यू टेक्निक. एक दिन रेस्ट देकर अगले दिन ज्यादा भागो. यानी try, there are 100 things to do in your own life. If this business is not going, this will happen. And God will always give you options. ठीक है, भगवान आपको options देता है. This business did not go. I went into social media. अरे ये I was a ghost for the 20 years of my life. Only WhatsApp we used to. I was never on Facebook, Instagram, nothing. Last 7, 8, 1 year, it's totally proliferation. But my point is, अगर इससे I can earn and more importantly influence the mindset of people who are trying to, if somebody watches this and वो उसको डाउट हो रहा है, because people tell me in the social media handles, हमें डाउट होता, हमने देखा और ये हो गया. Why is the reason I used to do daily vlogs? I will continue to do daily vlogs because I like it. और मैं tactical क्यों करता हूँ? क्योंकि वो मेरा forte है. I like to talk about geostrategy, less military history, few things. तो वो ठीक है. But why are we starting these conversations? Why will we calling guests apart from the army? Army में तो मैंने देखा कि क्या हो रहा है. What army does? ठीक है, 20 years I might not be as clued up as a general कि मेरे को सब कुछ मालूम है. They are obviously higher in rank, seen more experience, they have more experience. But 20 years, you know ki where it is heading to. So if I'm not gaining out of it, if I'm not letting other people come, जिन्होंने, because nation building की हम बात कर रहे हैं और सब चीजों की, so lot of people are involved in it. It is just not soldiers who are defending. Entrepreneurs हैं, there are politicians, there are bureaucrats, there are amazing people doing the job. So embrace, find, talk. Why we do this conversation, or why we call it Apex Conversations, why it is not a podcast, because we want to converse with people who are making a little bit of different. So it's diversification. Yani we are diversifying our content, and that is life. That is how you should do it. अगर आपको एक चीज दिखाई दे रही है, keep on diversifying. It will keep you engaged and it will have a wider audience. So I think so. That is how I look at it. तो फाइनेंस में कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन इज द ओनली होली ग्रेल. जैसे इन्वेस्टमेंट्स में कहते हैं कि भाई आपका इकलौता होली ग्रेल कि भाई ये एक चीज है जो सबके लिए काम करती है, इज डाइवर्सिफिकेशन. Absolutely. You should not have all your eggs in one basket. One basket. Is Similarly as with the army. You cannot, you will have always option A, B and C. Wherever you make your inroads, if you get option B आपकी ठीक जा रही है, so you will go inside option B. If option B is stalled, so never reinforce a failure. Go to option C. Correct. That is life. That is war. That is business. That is everything. So diversification. You cannot have one business. You cannot have in this world. You see any conglomerate कि बस वो एक ही business पे चला हुआ है. Pure diversification is the key. Absolutely. Similarly, whether it is content, आपकी life कुछ भी है, you are diversifying. So that's what the things are. Yeah. सर ये जो एपेक्स कॉन्वर्सेशंस आज हम शुरू कर रहे हैं, जिसका ये पहला एपिसोड है, क्या वजह है जो लोग अभी देख रहे हैं जो अभी सब्सक्राइब नहीं है चैनल पे, क्या वजह है कि उनको अभी के अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबाना चाहिए? ऐसा क्या उनको इन कॉन्वर्सेशंस में मिलेगा जो उनको आज की डेट में बाकी यूट्यूब के पॉडकास्ट पे नहीं मिल रहा है? Mindset. इलैबोरेट. Diversification. यानी कि जो गेस्ट हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोगों को हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, those are those people जिन्होंने लाइफ में कुछ किया है. मैं मानता हूं कि अगर आप देखिए, आई एम फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, यू आर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बैकग्राउंड, उनको लाना ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड. बट आप पता कैसे करोगे कि कौन कितना बड़ा फाइटर है? Who has done? There are amazing people who have done great jobs जो हमें पता ही नहीं लगते हैं. Absolutely. He can be a IAS officer, he can be a bureaucrat, he can be a politician.
he can be an entrepreneur, he can be a dev tech entrepreneur, he can be You could be an a athlete. model, athlete, a para athlete. यानी कि कितने सारे लोग हैं who are raising the bar above the things. So how many people to interact to, कितनी stories आप डाल सकते हो, because आप general vlog में भी मैं डालूंगा, it is me telling one thing of the other side of the perspective sometimes miss हो जाता है. Absolutely. कई guests होंगे जो I would say will be really cool from my side. ठीक है. How people, अब मैं आर्मी में आपको बताया कि मैंने 3 SSBs दी, 3 प्रोबेशंस की. एक एग्जांपल है, हर इंसान ने सेटबैक्स और फेलियर्स देखे हैं. सो देयर स्ट्रगल्स, उनकी ट्रायल और ट्रिबुलेशंस क्या थी, उन्होंने क्या फेस किया, हाउ द फैमिली सपोर्ट वेंट, हाउ सोसाइटी ट्रीटेड देम, हाउ they managed to overcome everything and then build a brand, then build a name for themselves. That is very important. यानी कि पता लगना चाहिए लोगों को. वही मिलिट्री हिस्ट्री की कहानी डाल दी, वही वो कर दिया, that is okay. You must have great respect for veterans and anyone who has adorned the uniform. Absolutely. But there are people जो बिना यूनिफॉर्म पहने भी काम कर रहे हैं. We must acknowledge them. That is the primary reason of launching this Apex Conversations. And secondly, I just want, rather हमारा plan is to have the Apex mindset. Okay. When I call the Apex mindset, the name has been chosen very carefully. Top, pinnacle. I've always treated myself as the best guy in the business. Because majority लोगों की problem क्या है कि they don't think they can be the best. True. If you can, जब बंदा खुद ही नहीं सोचेगा तो वो बेस्ट बनेगा कैसे? The first and the most powerful enemy which you face is you yourself. Convincing yourself before convincing others is the most important thing. True. So Apex Conversations will deal a lot in that. And Apex Ventures per se will have lot of those things involved in it. That is how I want to see it. I don't know where I will go 2 years, 3 years down the line. I'm doing it or not doing. I do things जो मुझे अच्छी लगती है. That has been the bedrock of my life. अगर मुझे operations अच्छे लगते थे, मैंने special forces join की. मुझे weapon technology भी था, मैंने उसको पढ़ा. मेरे को entrepreneur बनना था, मैंने वो किया. I follow my heart, and Apex is to follow your heart. People who have followed their heart, जिन्होंने अपने passions को follow किया. People who wanted to do something, did. Some might have failed. There's also an important lesson to be learned. कोई जीता, कोई हारा, it doesn't matter. But did he try? That is what Apex is all about. Did he give it his all out? Every day I fail. I wanted to run 30. I get tired out at 25. But did I come back again tomorrow or day after and try it for 35? That is what makes a difference. That is what I want from these conversations. That is the overall aim of that. Sir, on the topic of trying every day and at times failing and then trying again tomorrow is the Apex 21-day challenge जो आपने Yes. launch किया है. Yeah. इसके बारे में कुछ बताइए कि where did the thought for this come from? What do we want to achieve with this and where does this go in the future? जो Apex overall है, like, it is primarily for people who are like 3 verticals पे based है. Fitness, finance and fraternity. Okay. Fitness has to be of the, यानी कि Honorable Prime Minister need not come on Mann Ki Baat and say कि अभी oily food कम कर दो. यानी fitness has to be part of our culture. It has to be part of our lifestyle. Second is professional development. आप समझ रहे हो? So Apex Challenge is basically motivating guys to be best. It is a basic challenge of 21 days. So what I have planned, or what rather we have planned, is an intermediate and the apex of the Apex Challenge, which will come subsequently. So
1 hour of physical fitness जिसमें कोई distractions नहीं है, 1 hour of studying, ठीक है, sleeping early, getting up early, no drinking, no smoking, no processed foods, just trying to build that monk like discipline. यानी वो कुछ भी इधर उधर हो जाए. I know it's difficult, people are working, students are doing this, but till the time आप अपना routine set नहीं करते, till the time you don't conquer that mindset, you will not able to achieve anything. So Apex 21 is basically going for that, and the response is overwhelming. People do it, somebody fails, somebody tells me मेरे को चोट लग गई, कोई बात नहीं, आपको चोट लग गई है पाँव में, you do push-ups. अगर वो नहीं होता आप योगा करो, but get up, set a routine, do those things every day, every day, every day, and this is how you reach towards the top. Because if India has to grow, or anyone has to grow, individuals has to grow, country has to grow, everyone grows together. That is what the ultimate aim is. That is how we should go about it. मेरे को और कोई चीज समझ नहीं आती. If I can put that discipline into perspective, yeah, I think so. We will be able to achieve that aim. And young people are really going for it. I really like it. Men, women, all children, everyone should do it. Everyone who's in a reasonable age, they should do it. It is important. I think anybody at any age can do this, it. right? Yeah. There is no, even if a 80-year-old man wants to do, he wants to go for half an hour, 45 minutes of walk, Yeah. he should do it. He wants to read and develop a new skill, he should do it. Absolutely. If he's restraining from, at his age, he might not be smoking or drinking, but home cooked food खा रहे हो, normal खा रहे हो. Even if you are going outside, मैं कहता हूँ कि आप रेस्टोरेंट में गए हैं, have a healthy meal rather than having pizza, burgers. Have a dal rice, or have a whatever you want to have. Avoid the thing. So because treat your body as a temple, because it is like a high performance cow. जो आप इसके अंदर डालेंगे ये वैसा काम करेगी. And once you have set the routine, once you have done the things, you are rock on to hit the that is what it should be all about. That is what it should come into. And then we will increase it to 45, which is an intermediate challenge, and 90 will be apex of the apex. You will be transformed for life. That is the actual aim. Yeah. सर आई थिंक जैसे अभी जो 21 डे चैलेंज का टूर्नामेंट चल रहा है, दी Yeah. एपेक्स 21 डे चैलेंज टूर्नामेंट, जिसमें जो भी अगस्त के अंदर कंप्लीट हाँ, करते 20, हैं, yeah. उनमें से 10 लोग जो आपने सिलेक्ट करके, जिनसे यू हैव वन ऑन, I'll have a one-on-one. I want to, जो लोग 90 डे का करेंगे उनको उनसे तो मिल ही लेना They will be चाहिए. transformed. Why 90 days? Because Special Forces probation is for 90 days. Got it. Majority of the probation is for 90 days. 90 days. Every day is treated like a discipline. 90 days will change you. Nobody can stop you in this world. I can guarantee 2 hours of physical activity, it might increase to 3-4 hours of professional studies, and you're bang on clock. You will change your life and you can feel the difference. True. आप एक दिन पहले बर्गर या फिर पिज्जा या फिर कुछ ऐसा खाकर आप भागने जाओ, उसके बाद चावल या दाल खा के जाओ, you can see the greasy and non-greasy food का difference in your and physical activity, it is very important for everyone. You cannot live without it. Fit and rich, that is the mantra. ये आई थिंक अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि यार अब ना हमारी उम्र हो गई है, हम बहुत मोटे हो गए हैं, अब मैं बहुत स्मोक करता था, अब मैं क्या करूं. मतलब पीपल हु आर इन अ बैड प्लेस राइट नाउ बिकॉज दे हैव मेड सम बैड डिसीजंस. आई थिंक देयर बिगेस्ट प्रॉब्लम बिकम्स अ माइंडसेट प्रॉब्लम कि यार अब मैं ही अपने आप से हार मान चुका हूं. क्या इनको क्या बोले? The first thing is you need to change yourself. You need to think that you can change. Giving up at any point of time, यानी कि बिल्कुल ही छोड़ देना कि मैं हार मान चुका हूं, मेरी एज हो चुकी है. I don't think so that is an answer. Your age is what you think you are. आप लोग change, people have done अपनी एज में होकर कुछ ऐसे काम जो कि which is unbelievable. If that person can do it, you can also do it. It is just
You are stopping yourself. You are not putting that kind of pressure, that kind of motivation in your life. That is why I'm telling you, you should have a dream. अगर आप बोलोगे अब मैं रिटायर हो चुका हूं, तो then everything will retire. You should never retire in life. It is the most derogatory word in the dictionary. मैं कभी retired लगाना ही नहीं चाहता. People बोल देते कर्नल शिवेंद्र retired. I tell them to remove it. Only because it sounds so negative. Retire. यानी कि इसके बाद कुछ है ही नहीं. You're understanding? So these are those people who retire like that. So we don't want that. People need to fight. People need to fight on their mindset. People need to, and it is possible. Because you don't want to do it, you have just made a huge, I would say, a huge kind of, आपने अपने चार दीवारी बना ली जिसको आप ब्रेक नहीं करना सकते. It is possible. Everything is possible, and the results lie inside you.